Now, okay. Last lecture we completed with the short sums. Can I say today also we continue with the short sums and try to complete the entire exercise, and then tomorrow 2 or 3 important illustrations to be done, then the chapter will be over. And from Wednesday we are starting now with accounts. Enough of stats, okay? Last lecture, if I remember, we had completed sum number on page number 51. We completed sum number 7. On 51 we completed sum number 7. Okay, now go on to page number 52. Page number 52, on the top sum number 13 is given. Do you see that? Start copying the sum. Come on, start copying the sum. Page 52, sum number 13. बेटा बातें नहीं. Sigma P1 Q0 is to P0 Q0 is equal to 5:3, and sigma P1 Q1 is to P0 Q1 is equal to 3:2. Okay, what are we supposed to find? Last pair, past chase, and Fisher's index number. What are we supposed to find? Last pair, past chase, and Fisher's index number. Now raise your hand. What will be the formula for last pairs? Last pair का formula, last pairs का formula. Arsh? Sigma P1 Q0 upon sigma P0 into P1 Q0 divided by P0 Q0 into. Now can I say the way the information is given, I can directly apply the formula and can get the answer? See, P1 Q0 is to P0 Q0. P1 Q0 is to P0 Q0 into. So 5 divided by 3 into 100. So it is how much? 166.67. That is my last pair ka answer. 166.67. That's my last pair ka answer. Now raise your hand. What was the formula for past J? Shabir bhai. sigma P1 Q1 upon sigma P0 Q1 into 100. P1 Q1 upon P0 Q1 into 100. Can I say past J का भी एकदम easily आंसर मिल जाएगा? P1 Q1 upon P0 Q1 into 100. That is 3 divided by 2 into 100. That's 150. That's 150. बेटा जरा सेट कर दो ना यार. बेटा जो फर्स्ट एंड सेकंड बेंच वाले उनको रिक्वेस्ट है प्लीज टाइम पर आया करो. डोंट डिस्टर्ब दिस. जो भी फर्स्ट सेकंड बेंच वाले प्लीज बी ऑन टाइम. एंड इफ यू हैव नॉट नोटिस दिस, आई एंटर द क्लास नाउ एवरी डे बाय 3:05. I give you still 5 minutes to settle down. My lecture starts at 3. But even after my coming in the class, I can see people coming in. If I am allowing, it doesn't mean कि तुमको आते ही रहना है फिर. टाइम टू टाइम से आया करो, नहीं तो फिर अभी कल से 3:10 के बाद I will not allow you to enter. That's for sure. घर से 2:30 बजे निकल जाओ ना, 3 बजे का क्लास है तो. Beta, IL and IP, got the answer? Get me the answer for Fisher. Fisher, under root of IL into IP, 166.67 into 150. 150?
158.12. It's 158.12. Sure. Let's go ahead with the 14th sum. Let's go ahead with the 14th sum. If the ratios of last pair and past year's index number is 4:5, the ratio of last pair and past year is 4:5, and if the Fisher's index number is 150, what are we supposed to find? Past year's index number. Mark it a very important sum. Mark it a very important sum. Page 52, sum number कौन सा ये? 14. Page 52, sum number 14. Now they say, all attention on the board, then you copy. Ratio of last pair is to past year is how much? 4:5. And Fisher का इंडेक्स कितना दिया है? Fisher का इंडेक्स कितना दिया है अपने को? 150. So when the ratio is given 4/5, can I write it this way? IL is to IP, that is 4/5. Can I say IP यहां पर चला जाएगा? So IL is equal to 4/5 IP. What is 4 divided by 5? It is 0.8 IP. Can I say? Is this working, getting into your head? Pakka? Now, what is my Fisher's formula? Fisher's under root of IL into, what is beta IL? Can I say it is 0.8 IP into what is IP? That is gonna remain the same. We have to find that. Fisher की वैल्यू कितनी दी है मेरे को? 150. Raise your hand. What should be my next step? Raise your hand. What should be my next step? Shh. Raise your hand, I said. Sohail भाई, IP कॉमन लेंगे? नहीं नहीं नहीं, गलत है स्टेप, गलत है स्टेप. तेजस, can I say we need to square both the sides? Now if I square both the sides, this becomes 150 square. This is 0.8 into IP square. ऐसा हो जाएगा? अरे yes or no? What is IP square? 150 का square कितना आएगा? 22,500 is equal to 0.8 IP. So can I write IP square is equal to 22500 divided by 0.8? 2812. But this is IP square. How do I get IP? Can I say root कर देंगे हम 2816. कितना रहा? 167.71. That's my final answer. IP. बड़ा पता चला कैसे कैलकुलेट करें? Squaring both the sides and getting the answer. Is it done? Please copy. Please copy. Second last bench. Sit on the last bench.
ओम अंदर जा। बेटा 2 सम खत्म होने के बाद तुम लोग आ रहे हो, 2 सम खत्म हो गए। See, you people don't value your time. Time also is not gonna value you. लगने वाली है तुम लोगों की, देख लेना। 3 बजे के क्लास में 3:30, 3:15 साला बाग बगीचा बना दिया है तुमने। अभी वो लॉक हो जाएगा ना दरवाजा, फिर कल से पता चलेगा। आई एम ट्राइंग टू गेट दोस कीज। वंस आई एंटर आई ओनली लॉक द डोर फ्रॉम देयर। फिर बाहर सड़ते रहो तुम लोग, मेरे को परवाह नहीं है। इज द सम डन? 167.71, the final answer. Do you get that? Okay. Now section E में I remember 1, 2, 3, 4 ये सारे हो गए हैं। Even 5th वाला sum I remember we have done. Is it pending? Homework में था, right? Page 53, sum number 6. Mark it very important again. Page 53, sum number 6. Mark it very important again. The price of wheat increased by 70%. The price of rice increased by 40%. The price of bajri decreased by 25%. The price is getting decreased. The price of oil increased by, and the price of ghee decreased by. Now, if you remember last lecture, we had seen this increase decrease wala point. Acha, what we used to do when the answer says it's 40% increase, when they use the word increase, what we supposed to do? Say if they are saying it is increasing by 210, so what was our answer? 3110. So whenever there is a word what? क्या से 100 is to be added to get the index? Yes or no? तो वो पॉइंट इतना डिफिकल्ट नहीं है, उसके बाद वाला डिफिकल्ट है। बोर्ड पर खाली पहले ध्यान, बोर्ड पर खाली पहले ध्यान। हाउ मेनी आइटम्स आर गिवन टू अस? टेल मी वन बाय वन। फर्स्ट wheat, then rice, then bajri, oil, okay. नाउ इंडेक्स के लिए उन्होंने क्या बोला है? इंडेक्स के लिए, इंडेक्स व्हीट इज द प्राइस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? बाय व्हाट रेट? 70%. सो 100 प्लस 70% इंक्रीज हुआ है, सो माय इंडेक्स विल कम टू 170. देन राइस 40% इंक्रीज है, तो राइस विल बिकम 140. Bajri price going up or down? Down. Going up or down? Down. How much? 25%. So 100 minus 25 get 20. 25. So उसका इंडेक्स आएगा 70. Oil increased by 40%, that is 140, and ghee 5%, तो उसका इंडेक्स आ रहा है 90. सो ये इंक्रीज डिक्रीज वाले में तो कोई ऐसा प्रॉब्लम हमको अब आना नहीं चाहिए, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन सम बेस्ड ऑन दैट. तकलीफ अब आगे की लाइन में शुरू हो रही है, सारे पढ़ेंगे. मुझे खाली ये वेट्स तुम लोग इंडिविजुअल आइटम्स के मेरे को बता दो. चलो रीड इट ऑल, एंड इफ एनीबडी कैन अंडरस्टैंड रेज योर हैंड प्लीज. अगर किसी को समझ में आ जाएगा तो हाथ ऊपर करना. Beta, that is why I made this sum to be marked as important. Anybody getting the answer for weights? Anybody getting the answer for weights? No? क्या कह रहे हैं? यस बुराउद्दीन, घी का 1 कहां से आया?
ऑयल एंड राइस का घी से कुछ कनेक्शन दिया है। ओके, फिर तो घी का हमने 1 क्यों लिया? वेरी गुड। फिर आगे 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 क्या से राइस का जो डबल आ गया वो व्हीट एंड बाजरी। वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। यहां जरा ध्यान, फिर से जरा पढ़ेंगे, क्या लिखा है? द वेट ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑयल इज 3 times of ghee and importance of rice is double that of, मतलब क्या है से ऑयल का वेट जो है वो डिपेंड किस पे कर रहा है? घी पे। राइस का जो वेट है वो डिपेंड किस पे कर रहा है? तो इफ आई गेट द आंसर फॉर घी, कैन आई गेट ऑयल एंड राइस? एंड इफ आई गेट ऑयल एंड राइस, व्हीट एंड बाजरी इज डिपेंडेंट ऑन। तो अगर ये घी का आ गया तो सारे आ जाएंगे। सो घी का अगर कुछ भी वेट दिया नहीं है तो हम उसे 1, और ऐसा हम ब्रैकेट में लिख देंगे अज्यूम, बिकॉज 4-5 महीने के बाद जब तुम अपनी नोटबुक ओपन करोगे और जब ये तुम सॉल्यूशन देखोगे तब तुम्हें याद ही नहीं होगा कि 1 कहां से आ रहा है। इसलिए हमने ये ब्रैकेट में लिखा रहेगा कि इट इज, तो हमको याद आ जाएगा। अब ऑयल का क्या रेशियो है घी के? 3 times, तो कैन आई से इट बिकम्स 3। राइस इज हाउ मेनी टाइम्स? डबल। सो राइस, ऑयल, घी निपट गया। बट व्हाट अबाउट व्हीट एंड बाजरी? कैन आई से व्हीट एंड बाजरी, इट इज ट्वाइस ऑफ, इट्स ट्वाइस। कैन आई से तो इसका डबल हो जाएगा 4 ऑफ राइस। एंड नाउ कैन आई से आई कैन यूज द फॉर्मूला IW। Come on, start. IW upon sigma W. That would be the formula. Come on. But is the sum understood? How I got the information on weights? Is that point understood? How I got the information of weights? अरे कमीनो कुछ तो बोल दो। Okay, but let's start multiplying. 170 into 4, 3, 680, 280, 300, 1775, 14. So 1775 divided by 14. 126.79. 126.79. That's my final answer. इंटरप्रिटेशन बोला है? Yes. तो लिख लेंगे। तो मैं आता है बेटा इंग्लिश में। इंग्लिश में इंटरप्रिटेशन जरा रेज योर हैंड। हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ टू राइट द इंटरप्रिटेशन? व्हाट आर वी सपोज्ड टू राइट इन दैट इंटरप्रिटेशन? राव लास्ट बेंच। या बस ऐसा लिख देना है अपने को। कैसा? एज कंपेयर टू द बेस ईयर, एज कंपेयर टू द बेस ईयर द इंडेक्स नंबर हैज इंक्रीज्ड बाय 26.79%. 26.79%. Okay. Okay, but I remember
Yesterday we did the next sum, 7th wala we completed. Okay, section F. Section F. First sum was your homework, second was also your homework. We have done it previously. I remember. Question number 3 is today's homework. Question number 3 is today's homework. I remember question number 4 we have done it previously. Question number 5 again it's today's homework. Beta in both the sum, question number 3, question number 5. First thing what you need to do is you need to make a conversion table. And once you make a conversion table in question number 3, they are asking last pair, past years and Fisher's index number. And in question number 5 they are asking cost of living index by total expenditure and family budget method. Both you know how to calculate, but what you don't know is the conversion table. Trust me, tomorrow I'll do it on the board. मुझे पता है तुम में से 50% जनता conversion table नहीं बना पाएगी, फिर भी I am trying to give this in homework. Try, okay? Please try. Question number 6 we'll do it later on. 7th वाला sum उठाओ, page number 56. I want you to start sum number 7 on your own. Now pay attention. I am giving you all the required hint in that sum. If you read the sum properly, we are given with index, we are given with weight. Can I get cost of living index? Yes. And do you remember in the past we have calculated monthly income? Yes. किसे बेस ईयर की मंथली इनकम इज 15,000 तो करंट ईयर की इनकम कितनी ऐसा हम एस्टिमेट करते थे। इन द सेम सम, इन दिस सम आल्सो ऐसा ही बोला है कि बेस ईयर की इनकम 6,000 है तो करंट ईयर की इनकम कितनी होगी। 10 मिनट खुद से करना है पूरा सम। आई एम नॉट गोना डू दिस फॉर श्योर। क्वेश्चन नंबर 7 यू नीड टू डू इट ऑन योर ओन। आई एम नॉट डूइंग इट फॉर श्योर। Get me first cost of living index and then we calculate the monthly income. Beta, are you getting the index? Are you getting the index? Monthly income वो भी हो गया। What's the answer? Monthly income 186.4
13886.4. 13886.4. But are you getting it? Acha, how many of you got the index? Kitna right? 231.44. My current year's index in the given sum, current year's index you are getting is 231.44. How many of you got this answer? 231.44. Are you sure? Yes. I don't need to do it on board. Are you sure? Yes. Now pay attention. As compared to the base year, my index would be 100 always. And my monthly income is how much? 6,000. That's already given in the question. Yes. Now compared to 100, that is base year index, my current year index is 231.44. Then what should be my monthly income? They have asked us to calculate. So 6,000 into 231.44 upon 100. So 13886.4. 13886.4. Can I say that's our final answer? That's our final answer. Okay. But everybody got it, I hope. Question number 8 is again your homework, a very easy sum. We are given with weights, you just need to calculate I, index, and you need to get me the answer. Question number 8. Question number 9, that is also your homework. Question 8, question 9. Now page number 57. Question number 10, Mela? Yes. Mark it a very important sum. Question number 10 on page 57. But it's a chocolate sum, please try. It's a chocolate sum, please try. Better read the questions properly, don't make noise. Item, index, and weights. But this sum is a conclusion of our chapter. Conclusion, everything is coming in this sum. Whatever we have learnt, everything is coming. And that's why I trust you will not able to do it. I trust you.
बेटा एनीबॉडी रेडी विद द आंसर? Anybody ready with the answer? बेटा एनीबॉडी रेडी विद द आंसर? शायद से रॉन्ग है तो फिर बोलना ही मत. डोंट डिस्कस ओनली अगर रॉन्ग है. बेटा ड्रॉप योर पेन्स. ऑल अटेंशन ऑन द बोर्ड. यू ट्राइड, यू कुडंट डू इट. आई टोल्ड यू. Now all attention on the board. एकदम इजी सम है, एकदम इजी. Now आइटम में अपने को फूड दिया है पहला, फिर क्लोथिंग, देन फ्यूल, रेंट and miscellaneous items are given. Okay. Now index of food and clothing they have given directly. They have not asked us to use our brains. कितना है सीधा आंसर? 150 and 224.7. अब देखो इंग्लिश में the price of the fuel has increased by 220%. increased. तो क्या है, if the price of the fuel has increased by 220%, तो 100 plus 220 उसका इंडेक्स कितना आएगा? 320. The index will be 320. The word increase given, increase. Then rent. क्या है, from 4,000 it became 6,000. मतलब in my base year what was the rent? 4,000. And in the current year now it's 6,000. तो अगर मुझे इंडेक्स ढूंढना हो तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा P1 upon P0 into 100 का. 6,000 divided by 4,000 into 100, that's 150. सर बोलो आवड़ियूत नहीं बोलो. बेटा मिसलेनियस आइटम देखो कितने से बड़ी है. मिसलेनियस आइटम इट इज इंक्रीजिंग. अगेन द वर्ड इज गिवन इंक्रीजिंग. तो 1.7 times it means 100 plus 175, that is 275. 1.75 times means 175. And again the word is given increase. Sure? But the story doesn't end here. The expenditure for the first 4 groups. Now if you see the expenditure 40, do you see the percentage? 18, 12, 20. It's given in percentage. तुलसी बेटा उसी क्लास में चले जाओ, गुजराती पढ़ लो थोड़ी देर. स्टेट्स में मजा नहीं आ रही है तो बेटा प्लीज गो ना. इट्स ओके. बेटा इफ यू सी द वेट्स इट्स गिवन इन. राइट अ नोट. राइट अ नोट. When weights are given in percentage, total of weights would be equal to 100 always. If the weights are given in percentage, percentage, तो उसका टोटल 100 आएगा. ये अपने को पता चल गया. ऑलवेज कितना आएगा? 100. द टोटल वुड बी 100. नाउ कैन यू सी मिसलेनियस आइटम का वेट्स दिया ही नहीं उन्होंने. बट कैन आई फाइंड इट आउट? कैसे? कैन आई से टोटल अगर 10 है तो उसमें से ये चारों आइटम माइनस कर दो. सो ये क्वेश्चन मार्क जो था वो 10 अपने को मिल जाएगा.
एक बार ये क्वेश्चन मार्क 10 अपने को मिल गया, फिर हमें क्या करना है, सिर्फ IWs. Can I say we have to do the IWs? 150 into 40, 6,000. 2 to 4.7 into 18. 40. 4.6. 12 into 320. 38. 150 into 220. And it's 2750. 19634. 19634.6. तो मेरा जनरल इंडेक्स या तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स सिग्मा IW अपॉन W आएगा. It's 196. Can I say that's my final answer? 196.35. इंटरप्रेट कर दो खुद से कर दो. But I just revise again. How I got this index? वो पता चला. Food and clothing was directly given. This is increasing by 220%, so the index is 320. In the rent they have given me current year price and a base year price. तो P1 upon P0 करके किया, and miscellaneous was 1.75 time, and again the word was increase, and that is why 100 plus 175 we got 275. The sum didn't end over here. They had one more trick for us. Weight of the last miscellaneous item was missing, but if you see the sum, the weights were given in the percentage, so total has to be 100 always. Weights, if it is in percentage, if it is in percentage. So we found out the missing information by subtracting, and Apache we got the final answer. Is the interpretation written? Yes. Is the interpretation written? Yes. Very good. What I want is right now, I want you to start on page 54, sum number 3. I had given you in homework, but उसको start करो. Conversion table. Let me see. कितनों से बनता है? चालू करो.